Today's conversation is about testing it out with Dr. Omar Chughtai. Dr. Omar Chughtai entrepreneur हैं, खुद डॉक्टर हैं, बहुत करीब से देखते हैं हेल्थ केयर को, और ना सिर्फ करीब से खुद एज अ प्रैक्टिशनर देखते हैं, बल्कि उसकी इकोनॉमिक साइड, उसकी कॉस्ट, उसको मुमकिन बनाना, उसको एक्सेसिबल बनाना, ये भी समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, आप सबका साथ रहेगा, आप सबका बहुत शुक्रिया अभी तक क्वारंटीन सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू कासिम, थैंक यू मैनी अदर्स फॉर जॉइनिंग इन। Dr. Omar Chughtai, let me quickly tell you, is a medical practitioner, entrepreneur, and an educationist. So बहुत ही तबाही combination hai ye, with almost 25 years of experience, so lots of experience. He's currently serving as Director Operations at the Chughtai Lab. Dr. Umar graduated from the King Edward Medical College in the year 2000 after completing a residency in Anatomic and Clinical Pathology from University of Texas. He did his fellowship in Surgical Pathology, so lots of medical qualifications there. Sorry for my ignorance. He is a diplomat of the American Board of Anatomic and Clinical Pathology, and a visiting assistant professor of pathology at the University of Texas Medical School at Houston. Lots of credentials to back this amazing man. I'm very, very happy that he has taken out the time to join us this afternoon. Thank you, Dr. Saab, for taking out the time. Thank you so much for having me. I'm sorry, I have a very, very sad internet today, and I'm trying my best to 4G it out. I'm going to say it out loud. I'm on Telenor 4G. This is what you get, okay? Dr. Saab, how's the lockdown for you? The lockdown has been lifted now. It's been converted into some sort of a smart lockdown, but we see traffic everywhere. So it's mostly a thing of the past now. Wonderful. Lahore is quick to move on. Yeah, I mean, I can understand if you look at it from a macroeconomic point of view, there is really no easy answers. It's a very difficult situation, and it's not unprecedented, but it's definitely once in a lifetime situation for almost all of us. And so I'm sure the policymakers are dealing with all sorts of quarters and all sorts of issues. This can, of course, health is going to suffer. Yeah. Leaders are having the time of their life, especially the political ones. Things are changing so fast. But thank you, Dr. Saab, for joining us. हम बात करेंगे testing it out पे. मैं बताना चाहता हूँ कि हम पहले जरा समझेंगे कि डॉक्टर साहब की अपनी जर्नी क्या है as a practitioner, as an entrepreneur. फिर हमको जरा factual insights जानेंगे कोरोना सिचुएशन के हवाले से, especially testing के हवाले से. हर तरह की कहानी है, जितनी ज़ुबानें नहीं हैं उससे ज़्यादा कहानियाँ हैं. Unfortunately, we need to hear it from people who are really doing this in the field. क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं इस सेक्टर की? जब भी हम सेक्टर्स को उठाते हैं तो यूजुअली डार्क साइड चैलेंजेस पे आ जाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे प्रोग्रेस किया है. डॉक्टर साहब से सालों लगा दिए हैं, जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, चैलेंजेस क्या हैं डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी बिजनेसेस के, क्योंकि जितने ये सस्टेन करते हैं, जितने ये ग्रो करते हैं, उतने ये एक्सेसिबल होते हैं, मुल्क भर में मुमकिन होते हैं. सो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्ट एरिया ये भी हो सकता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है हेल्थ केयर में. कारोबार सिर्फ ट्रेडिशनल कोरोना आया तो सिर्फ ग्रोसरी नहीं है, बल्कि बेशुमार चीज़ें हैं. और ग्रीन फील्ड हम गुफ्तगू एंटरप्रेन्योर से जब करते हैं तो वो अपने डोमेन के बारे में खास वो बातें बताते हैं जो कि शायद ही आपको कहीं और से पता चल सकती हैं. हम कुछ स्टोरीज जानेंगे. चुगताई लैब का बहुत काम है कस्टमर फैसिलिटेशन में और बहुत ही हाई एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज मुमकिन बनाने में. कोई रिस्क लेता है, बड़ी मशीन लाता है, उसका कारोबार चलाता है, तो आपका मेरा पेशेंट जा सकता है या पोटेंशियल जा सकता है अपने डायग्नोस्टिक्स के लिए. सो सलाम टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु मेक इट हैपन. वील हियर इट फ्रॉम डॉक्टर साहब. और जाते जाते 3 by 3 करेंगे. 3 विशेस पाकिस्तान के हेल्थ केयर के लिए, गवर्नमेंट से 3 बड़ी आस क्या है, और पाकिस्तानी कस्टमर पेशेंट जो विजिट करते हैं लेबोरेटरीज उनसे बड़ी आस क्या है. This is a quarantine series, testing it out. Dr. Omar Chughtai has joined us from the Chughtai Labs. Join in Sardar, Sarah, Qasim with all your questions. We will get sailing. Thank you, Dr. Saab, once again. Please tell us briefly about your journey as a practitioner, as an entrepreneur in the healthcare. Assalamu alaikum again. Thank you so much for having me. I grew up in a family of doctors. Both my parents are doctors. And my father started this lab in 1983. So I grew up with the lab. The lab was, as much a part of our lives as any of my siblings.
And so I always wanted to work with my father. So when I went to medical school, then when I graduated, then I went to the US. अच्छा डॉक्टर साहब यू हैव अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि हम जरा उर्दू में भी मिक्स मैच करके बात कर लें? एब्सोल्युटली। तो अमेरिका चले गए 2000 में, वहाँ पे स्पेशलाइज किया पैथोलॉजी में। तो 2007 में मैं वापस आ गया था। एंड उस वक्त से आई जॉइन माय फादर, और उनके साथ ही पिछले 12-13 साल से वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर, और it's been the ride of my life. It's been the best time. As far as Chughtai Lab is concerned, we do testing. We have testing facilities in several cities, और collection centers हैं. I mean, it's हमारी कोशिश यही है कि through a network हम इसकी access, जो अभी आप बात कर रहे थे, access को हम enhance करें, छोटे शहरों में भी, छोटे गाँव में तक जाएं। तो इसका यही मकसद है। So wonderful, you grew into it, but so wonderful. पहले से सवाल, I will make him wait for this answer. Okay, you've got to hang on till we come to this. But thank you, Shafat. Please, Dr. Saab, you were saying something. जी, आज से 10-11 साल पहले, 10 साल पहले डेंगू क्राइसिस आया था पंजाब में। तो वो पहला ऐसा सिनेरियो था जब हमारी टीम को, हमारी लैब को एक चैलेंज भी था, पूरी डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री को, पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशन को एक चैलेंज था टू स्टेप अप और उस चैलेंज को बीट करें। एंड अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त हम सारों ने हाथ में हाथ डाले और उस प्रॉब्लम को मीट किया। बैक टू बैक ईयर्स में बहुत बड़ा डेंगू आउटब्रेक आया था, लेकिन उसके बाद से फिर कुछ प्रैक्टिस हो गई, फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता टीम बनती गई। तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा जब ये कोविड का क्राइसिस आया, अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम लैब के अंदर काफ़ी मजबूत है, प्रोफेशनल है। और सिर्फ मैं अपनी लैब की बात नहीं करता, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड जिस तरह पूरे मुल्क में डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री ने और हेल्थ केयर प्रोफेशन ने जिस तरह इस जिम्मेदारी को टेक अप किया है, वो ट्रूली इट्स ये रिमार्केबल चीज़ है। हमने बहुत फ्रंट फुट पे आके हमने इस चैलेंज को मीट किया है। We rarely recognize हमारे मुल्क में कुछ हॉट सब्जेक्ट्स हैं और वही हॉट सब्जेक्ट है और वही हॉट सब्जेक्ट है और वही हॉट सब्जेक्ट है। I hope the conversations change. Shafat has also raised this question: how reliable are the testing kits, the latest technology, which is more accurate? What is the current cost? So loaded question है। और साथ हमारा सवाल ऑलरेडी था कि factual insights कुछ दे दें कोरोना टेस्टिंग सिचुएशन पे, क्योंकि all kinds of stories are out. So देखें, पहली बात ये कि आज सुबह भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जी दुनिया का जो एक्सेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसलिए क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलाइंड है दुनिया के एक्सेस के साथ, तो इसलिए शायद ये वायरस आ गया है। किसी ने कहा कि जी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही थी इसलिए वो वायरस आ गया है। कंस्पिरेसी थ्योरीज तो आप जितनी चाहे बना सकते हैं, हमने डील करना है फैक्ट्स के साथ और साइंस बेस्ड फैक्ट्स के साथ। एंड व्हाट द साइंस टेल्स अस इज के there's an outbreak that started in China, और फिर जब वो फैली और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में गई, फिर यूएस में गई, it was a matter of time कि वो पाकिस्तान में आती। और जब आया है तो उस वक्त फिर हम लोगों ने एज अ कंट्री तकरीबन वही इकदाम किए हैं जो कि ज़रूरी थे, जो बाकी दुनिया ने भी किए हैं इस चैलेंज को बीट करने के लिए। और उसके अंदर डायग्नोस्टिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। साथ ही साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल एक्चुअली वो डायग्नोस्टिक्स का नहीं, वो एक चीज़ है कॉल्ड NPI, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, यानी कि वो बिहेवियरल चेंजेस जिनकी वजह से आप वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एंड लॉकडाउन is the biggest example of NPI, non-pharmaceutical intervention, कि आप social distancing, physical distancing करके वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। And so actual heroes in all of this जो है वो सारे पाकिस्तानी हैं, वो सारे लोग जो इतने हफ्तों से अपने आप को कट ऑफ करके या मिनिमम इंटरेक्शन के साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि नेचुरली काम नहीं कर पा रहे, काम पे जा नहीं पा रहे। इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बहुत
स्मॉल क्वार्टर्स में, बहुत कम छोटी जगह में भी हैं, बट दे आर मैनेजिंग। तो इसलिए हम सारे इस क्राइसिस के अंदर इकट्ठे हैं, और हम सारे ही मेरे ख्याल से अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं इस क्राइसिस को मीट करने के लिए। As far as diagnostics is वंडरफुल। concerned, so we are using the same PCR technology that is being used elsewhere in the world, and the same kits that are being used elsewhere in the world. The kits जो हम use कर रहे हैं वो FDA authorized हैं, जिस तरह होनी चाहिए, and इसीलिए because it's I mean again हम पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी की बात करें, साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी और मेडिकल कम्युनिटी को भी थोड़ा हैट्स ऑफ टू देम कि कितनी जल्दी वायरस को स्टडी किया गया, वायरस के जीनोम को स्टडी किया गया, उसके अगेंस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया गया। इस वक्त मेरे ख्याल से जो भी एक डिजीज का साइकिल होता है, जब वो डिस्कवर होता है, उसके बाद फिर उसके डायग्नोस्टिक्स डिस्कवर होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट डिस्कवर होता है, फिर इवेंचुअली उसकी कोई वैक्सीन अगर जरूरत हो तो बन जाती है। वो सारा लाइफ साइकिल जो है मेरे ख्याल से जो कई सालों का होता है, वो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि उसको 6-8 महीने के अंदर कंप्रेस कर दिया जाए, और अभी तक हम काफी कामयाब हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, के डायग्नोस्टिक्स को बहुत जल्दी दरियाफ्त कर लिया गया और फिर अवेलेबल कर दिया गया, और इसी तरह मल्टीपल ट्रायल्स चल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की ट्रायल्स चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, जो चेक कर रही है कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करती है, कि एजिथ्रोमाइसिन काम करती है, कि वो कोई और एंटीवायरल काम करती है, और कुछ के प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स कुछ इनकरेजिंग भी हैं। सो मेरे ख्याल से एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी एंड एज अ हेल्थ केयर कम्युनिटी ओवरऑल सारी दुनिया में बहुत तेजी के साथ इस चैलेंज को मीट किया जा रहा है, बट वी डू नीड टू बी पेशेंट। Can you comment on the cost of it? What is the current cost of testing, or cost reduce होगी, accessibility बढ़ानी पड़ेगी? देखें, the cost of testing of course is a factor. The cost of testing does not include just the cost of the test. If you look at the private organizations, we have to look at all the ancillary costs that come with it. For example, unprecedented price hikes for us in personal protective equipment. फिर साथ ही साथ we set up our own inpatient facility, जो हमारे अपनी जो टीम के लोग हैं, अगर उनको कोविड हो जाए तो उनके लिए the ventilators and all of those things, because you cannot ask healthcare professionals to step into the fire if you don't have a plan to take care of them either on the back end. तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, but having said that, हम एक प्राइवेट इदारा है। if you think about it, अगर हम across the country देखें तो testing as far as PCR is concerned has been available throughout. और मैं again बहुत दाद देता हूँ, I don't want to get into the politics of it, लेकिन different provinces ने different approaches लिए हैं, but अगर आज देखें तो दोनों तरीकों से टेस्टिंग को बहुत वाइडली अवेलेबल कर दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत शुरू में फैसला कर लिया कि they are going to outsource it, so they outsourced it to very reputable places like Aga Khan and Indus and Dow. And so day one पे they decided कि हमने we're not going to reinvent the wheel, और जल्दी में हमें जरूरत है, and they did it, और they were able to scale up very quickly. पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया that they had infrastructure in place, लेकिन उनको कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत थी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, और उन्होंने वो किया है। So even now, private labs have done only a small fraction of the testing that the government has done, and again that's a credit to the government. तो इसलिए मैं किसी एक इदारे के लिए, किसी एक प्राइवेट इदारे के लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। As a country and as various governments, differences of opinion aside and difference of approaches aside, we have actually met this challenge very ably. Wonderful. So I think you fairly highlighted the healthcare response globally and also nationally to the COVID crisis. I'd like to know कि और क्या accomplishments है, especially पाकिस्तान में diagnostic sector, healthcare में ही शुमार करते हैं इसको as a sector, and would you like to highlight any other? You have highlighted dengue, and so ये तो crisis में हम चलें जाग जाते हैं, but otherwise how has the sector progressed? I think जो diagnostic sector है, अगर आप पिछले 10 या 15-20 साल को देखें तो उसके अंदर बहुत massive improvement है from before. उसके अंदर it has been led by some very good names like Aga Khan, Shaukat Khanum, Shifa International Hospital, Islamabad.
अब ये वो, एंड दीज आर जस्ट प्राइवेट और सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छे इदारे हैं। तो हम एक फैशनेबल चीज है पाकिस्तान को डिस्पैरेज करना या नेगेटिव बात करना पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अगर आप देखें कि द मेन्यू ऑफ टेस्ट मेन्यू दैट इज अवेलेबल इस मुल्क में is comparable to any or favorably comparable to any country. तो ऑफ कोर्स दुनिया में कोई लैब ऐसी नहीं है जो सारे टेस्ट करती हो। सो हर लैब कोई ना कोई टेस्ट आउटसोर्स करती है। उसकी वजह इट्स नॉट जस्ट कि लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, इट्स ऑल्सो कि आपको उसका ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल अ लैब दैट इज बेस्ड एट अ कैंसर सेंटर probably कैंसर से रिलेटेड टेस्ट ज्यादा करती होगी एज अपोज टू अ लैब दैट इज बेस्ड एट अ ट्रांसप्लांट सेंटर, वो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड टेस्ट ज्यादा करती होगी। सो बट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, आई थिंक डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर, खासतौर पे लैब सेक्टर के अंदर पिछले 20-25 साल के अंदर हमने बहुत प्रोग्रेस किया। हम दुनिया के बहुत करीब हैं और वी एक्चुअली मीट इंटरनेशनल क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी। तो एंड आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 4-5 years दुनिया से सैंपल्स यहाँ आया करेंगे टेस्ट होने के लिए। Sure. Faiza wants to know your view on the government ending the lockdown and the toll it's having on the healthcare sector. देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लॉकडाउन एंड होगा तो इंटरेक्शन बढ़ेगा लोगों का। जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वायरस स्प्रेड करेगा। दिस इज नॉट अ मिस्ट्री, हम यही बात कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, इसीलिए लॉकडाउन किया गया। मैं अगेन कमेंट नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट की और पॉलिसी मेकर्स की क्या मजबूरियां हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्केल पे कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस लॉकडाउन का फायदा फिर भी हुआ है। अगर हम आज इसको कम भी कर देते हैं, लिफ्ट भी कर देते हैं, तो उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल इज लॉस्ट, बिकॉज मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमने वी डिड मैनेज टू फ्लैटन द कर्व सक्सेसफुली, और उसकी वजह से इट हैज बॉट द कंट्री टाइम। इट हैज बॉट अस टाइम कि हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकें, डायग्नोस्टिक्स की भी, ट्रीटमेंट की भी। हाँ, और हम देख सकें विच मेडिसिन वर्क, एंड ऑल्सो हम देख सकें कि ये वायरस हमारी पॉपुलेशन में कैसा बिहेव करता है। एंड थैंकफुली सो फार द एविडेंस सजेस्ट कि इट इज नॉट एज डेडली जितना हमने देखा है इटली में या न्यूयॉर्क में, उस तरह का बिहेवियर नहीं है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि एज अ नेशन वी आर अ मच यंगर population as compared to Italy and Spain and New York. But having said that, I mean, इसमें भी कोई शक नहीं है। I personally know people who have passed away because of this. So ऐसे नहीं है कि it's nothing. It's a serious illness. अगर किसी को हो तो it's an important thing. It's a serious illness. लेकिन a large majority ऐसे भी है जो जिसके बाद बहुत mild symptoms होते हैं और बहुत सारे cases में नहीं symptoms होते हैं। Thank you, Dr. Saab, for taking the question right away. Sarah, if you're with us, you can ask your question. Okay. What are the benefits of IgG antibody testing versus the PCS test? So it's a very good question. The PCR test is to diagnose somebody who's currently infected. किसी को इस वक्त अगर symptoms हो रहे हो, किसी को बुखार हो या खांसी हो, तो उनको diagnose करने के लिए the test is PCR. Now, what is an antibody test? Antibody test ये है कि आपको जब भी कोई infection होती है, वो ये कोरोना वायरस हो या डेंगू हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक लार्ज मेजॉरिटी पेशेंट्स की ऐसी भी है जिनको वायरस की इन्फेक्शन हुई, कोविड की इन्फेक्शन हुई, और वो उनको माइल्ड सिम्टम्स हुए या सिम्टम्स नहीं हुए, वो रिकवर कर गए। ये वो लोग हैं जिनको WHO अभी भी रेडी नहीं है कहने के लिए कि ये लोग इम्यून हैं कोविड से, एंड दैट इज फेयर। The question really over there is कि वो लोग long term immune हैं कि नहीं है, but definitely there is some level of protection that these antibodies give to that person. तो antibody testing is primarily designed एक ऐसा tool है जिससे हम देख सकें कि हमारी population में कितने % लोग हैं जो already virus को expose हो चुके हैं और उससे recover कर चुके हैं। इसका individual patient के acute patient के diagnosis में role नहीं है। इसका ये जरूर है कि आपको बता सकता है कि आपको 2 महीने पहले या जब भी at least 2 to 3 weeks ago
आपको ये वायरस हुआ था और आप रिकवर कर चुके हैं। ज्यादा यूजफुल पब्लिक हेल्थ के हवाले से पता चल सके जी कितनों बिल्कुल। को हुआ, ट्रेंड क्या है। वंडरफुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। आई नो वी हैव ऑलरेडी हैव क्वेश्चंस बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबॉडीज क्वेश्चंस। व्हाट इज ऑन द पल्स should be taken. You're very kind to be answering everything that I'm throwing at you. अच्छा जी, I would like to know कि क्या challenges हैं diagnostics और laboratory businesses के? our biggest challenge हमारे मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज लैब्स में या डायग्नोस्टिक्स में वही है जो किसी भी और इंडस्ट्री में है, वो है ह्यूमन रिसोर्स का। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत टैलेंटेड लोगों को बहुत अच्छी डिग्रीज भी दे देते हैं, लेकिन उस सारी स्कूलिंग के दौरान और एजुकेशन के दौरान उनको हम वर्क एथिक नहीं सिखा पाते। तो इसलिए जो प्रोफेशनल वर्क एथिक है उसको सिखाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे हमारे वेदर वो कोई लैब का काम हो या कोई और इंडस्ट्री हो, उसके स्केल करने की या ना करने की सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से ये है कि हमारे पास और हर टीयर पे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। बट हैविंग सेड दैट, आप इसी में से फिर ये टीम आप बना भी सकते हैं और उसको आप बिल्ड भी कर सकते हैं। तो व्हेन यू डेवलप टीम ओवर टाइम, तो उसमें से बहुत सारे हीरे भी आपको नजर आते हैं। That's a very interesting point. Lack of HR, it's amazing. On one end, you have so many people saying "Naukri nahi hai, don't know what to do with their life, how to build a career." On the other end, I've worked with Shifa last year, Shifa Hospital, and they're scaling up big time. And they said, "Where do we bring the people from? लोग कहाँ से आए?" तो जो देख रहे हैं, सुने कान खोल के, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो स्केल करना चाहते हैं वो अच्छे लोगों की तलाश में जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने ये भी हाईलाइट किया कि यही एक्चुअली अपॉर्चुनिटी भी होती है चुगताई लैब टाइप एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसी टीम्स बना सकते हैं और एचआर मुसलसल इंडक्ट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू बिल्ड ऑन द चैलेंजेस? I mean, उसके अलावा as far as if you look at the relationship between the private sector and the government, diagnostics industry के अंदर there are massive duties and taxes associated with import of these reagents and kits. We are talking other than COVID. How much would it be? And that of course is a huge challenge. अगर आपने कोई चीज डेवलप करनी, कोई फैसिलिटी डेवलप करनी है, तो all of those costs have to be taken into account, and that's a big challenge. But you know, I'm not a big big on challenges. I think challenges are opportunities in disguise. तो आप जब थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, जिस तरह अभी हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे थे, तो मैं अपनी टीम को यही कहता हूँ कि यार हमने क्वालिटी का अगर अकॉम्प्लिश करनी है और कस्टमर केयर अकॉम्प्लिश करनी है, तो उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी की ड्यूटी कुछ नहीं कहती ना। सो यू नो, आई मीन इफ यू, अगर आप लैब की इक्विपमेंट एक जैसी कर लेते हैं, अगर आप लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा कर लेते हैं, अगर आप लैब की टेस्ट मेन्यू फॉर दैट मैटर एक जैसा कर लेते हैं, तो द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देन इज कि आप पेशेंट फोकस्ड कितने हैं, आप कितना ज्यादा फोकस्ड हैं अपने लोग, अपने पेशेंट्स के, अपने कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर। एंड दैट्स ऑल ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स ऑल ट्रेनिंग एंड परपेचुअल ट्रेनिंग, नेवर स्टॉपिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो वो I think and that's not a challenge which is unique to our sector, or for that matter कि हमारे मुल्क में यूनिक हो, ये सारी दुनिया में ये चैलेंज आता है, कुछ में ज्यादा आता है, कुछ में कम आता है। Yeah. True that. Basma कह रही है, but there's a concept among our people that's all fake, the whole corona situation. Dr. Saab, I was in Islamabad the first 25-30 days of the lockdown, and then I came to Karachi. तो इस्लामाबाद में तो लॉकडाउन वाज एक्सेप्टेड, कोरोना तस्लीम करते हैं सारे लोग जिनसे मुलाकात हुई। कराची में मैंने इतनी कॉन्स्पिरेसी सुनी है कि ये किसकी वजह से हुआ है, कौन सी वजह से हुआ है। There's a story after story. Dr. Saab answered it in one line that it's a reality. It's a situation that no matter how much you keep denying, it's only gonna not help us change the behavior that we need to change at this point. जो हमें behavior change की जरूरत है, उसके लिए acceptance जरूरी है। Dr. Saab, would you like to comment on it any further, or should we move on? I think we should move on. You cannot refute conspiracy theories. That's why they're called conspiracy theories. So it is what it is. Okay, point taken. What is the accessibility status of services of labs diagnostics across Pakistan? बड़ा मुल्क है, हम बहुत सारी आबादियों के पॉकेट अंदरून पाए जाते हैं। Yeah.
No, but I think अगर आप तीन बड़े networks हैं हमारे मुल्क में, I mean, Shaukat Khanum Hospital has a very nice lab, and they have a very nice and vast network of collection centers and labs. Same with Aga Khan University Hospital and their lab, and then us, and then there are a couple of regional labs also, जिनके भी अच्छे networks हैं. So I mean, like I said, it is improving all the time. Uh, I wish कि एक दिन ऐसा आएगा जब इवन छोटे शहरों के अंदर भी लैब्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी, लेकिन ये एक लाइफ साइकिल है. हमने दुनिया में भी देखा है कि एक क्वालिटी एक अकॉम्प्लिश होती है एक बड़े अर्बन सेंटर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट ट्रिकल्स डाउन टू स्मॉलर प्लेसेस. फॉर एग्जांपल, one of my favorite stories that I tell is we are not just a lab, we are also an institute of pathology. तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी होती है, और हम पैथोलॉजिस्ट प्रोड्यूस भी करते हैं जो FCPS करते हैं. तो we have two graduates, one from Gujranwala, and one from Surgoda. So when they finished, जब उनकी residency खत्म हुई, उन्होंने FCPS कर लिया. So then they have moved back to Surgoda and to Gujranwala, और अब वहाँ पे वो lab run कर रहे हैं. तो इससे quality in those cities is improving. So that's I think one of the major contributions that we can have as a teaching organization. वंडरफुल. जब इदारे बड़े होते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, और इसमें भी बड़ा अबंडेंस चाहिए सोच के अंदर, खास तौर पे ऐसे सेक्टर्स के अंदर. कंपटीशन अपनी जगह पे, लेकिन इसमें जितने लोग बड़े, जितने लीडर्स बना सकें, जितने इंस्टीट्यूशंस और टैलेंट डेवलप कर सकें, बहुत हेल्प होती है. और जहाँ के लोग जहाँ वापस जाते हैं अपने साथ को लेके जाते हैं. वंडरफुल पॉइंट देयर, डॉक्टर साहब. Thank you for highlighting that. I would like to know, are there any greenfield opportunities जहाँ पे अभी तक entrepreneurs नहीं पहुँच रहे, जो aspiring entrepreneurs नहीं सोचते? यस, अगर हम एक सेकंड के लिए जरा कोविड को ही अगर देख लें, तो कोविड ने हाईलाइट किया कि हम कितने डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग इन हेल्थ केयर, whether it's I'm done with the medicine. question. के are there any greenfield businesses आ सकते? Yeah, so like I was saying कि कोविड ने हाईलाइट किया है कि दिस आउटब्रेक हैज हाईलाइटेड कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे for diagnostics, for medicines, for personal protective equipment, for कोई भी चीज़ जो हमें हॉस्पिटल में चाहिए हो, वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती. सो ये पूरा एक सेक्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है लोकली मैन्युफैक्चर करके. और जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुरू में जब प्राइस हाइक आया, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकली मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए टाइवेक्स सूट्स. कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर करें ये मास्क भी, और N95 मास्क भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सर्जिकल मास्क तो बन रहे हैं डेफिनेटली. सो हम चाहें तो हम कर सकते हैं. इसी तरह किसी ने मुझसे पूछा कि जी ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये पाकिस्तान में बन सकते हैं. मैंने कहा जी बिल्कुल बन सकते हैं. इट जस्ट रिक्वायर्स कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा टाइम दें. नाउ आई एम नॉट somebody who is inclined towards making and manufacturing lab tests. मेरा काम और है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं. और ज़रूरी नहीं, जिस तरह हमने फार्मास्यूटिकल्स में किया कि हमने शुरू किया जेनेरिक्स के साथ, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम ओरिजिनल सॉल्ट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं. इसी तरह हम डायग्नोस्टिक्स में भी कर सकते हैं. इसी तरह हॉस्पिटल की, आई मीन वेंटिलेटर्स भी पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते, और हॉस्पिटल बेड्स पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं. नीड ऑफ आवर हुआ तो लोग मिल गए, कोलैबोरेशन हो गई, 3D प्रिंटर्स वाले आ गए और बनना शुरू हो गया. आई थिंक वी मेड गुड प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट. यस, तो अब मैं कहीं पढ़ा था कि पेंडेमिक्स आर हिस्ट्री एक्सेलरेटेड. सो वी आर सीइंग दैट बिफोर आवर आईज कि किस तरीके से एवरीथिंग इज हैपनिंग क्विकली. In business training, there were in my clients, there were some who were disrupted, and there were some who were being disrupted, and there were some who said कि हम तो बहुत ही आगे जाके disrupt होंगे. And I think Corona has, disrupted all of us all together. So it's massive change happening in very, very quick time. What are the challenges to research? Sarah wants to know. It's an important subject in every
domain, I believe, and every domain struggles when it comes to research in Pakistan. You collect a lot of data. What can we make of it? What do you make of it? बिल्कुल सही बात है. Research is only as good as the researcher. हमारा रुझान ओरिजिनल रिसर्च की तरफ अनफॉर्चुनेटली नहीं है. हम लोग एक आर्टिकल पढ़ते हैं किसी फॉरेन जर्नल में, कहते हैं इसी को रिक्रिएट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हम छाप देंगे कि जी देखें हमने यहाँ पे किया, उन्होंने वहाँ किया था, हमने यहाँ किया. We and again this goes back to जिस क्वालिटी की एजुकेशन हम दे रहे हैं एट इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग में. तो बट चैलेंजेस रिसर्च के नहीं. अगेन चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस आई एम नॉट बिग ऑन चैलेंजेस. कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो ओवरकम नहीं हो सकता अगर माइंडसेट सही हो. चैलेंज है काम करने वाले लोग फॉर ट्रांसलेटिंग दैट. यही पाकिस्तान जैसे मुल्क की तो अपॉर्चुनिटी है. दिस इज अ गोल्ड माइन कि जिस चीज में जाए चैलेंज है, आप एक पकड़ लें और आप उस पर छा जाएं, चीते हो जाएं, चुगताई लैब हो जाए, अपने काम में माहिर हो जाए, अच्छे हो जाए. और जब आप अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो आप ऐसी दुनिया को बेहतर बना रहे हैं. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करने की जरूरत है. एंड डॉक्टर साहब highlighted that for professionals as well who want to make a healthcare career, there are opportunities, but your attitude will take you a long way. Beautiful. Please tell us a few patient stories. In this, customer is important, and you, as a lab, have committed to raise the customer bar, raise the quality. Is business में बड़े ethical challenges भी रहे. So tell us a few stories that come from your institution. You're absolutely right. Ethics and privacy, for example, are very important. And when this outbreak started, in normal times, privacy levels at our lab are so high that if a family friend of mine gets a lab test done, my wife does not find out. And that's how it should be, because jiska मामला है वो उसी का मामला है. So, but initially, जब healthcare emergency declare हुई and the government started asking us to report all cases, और उसके बाद फिर unfortunately कुछ patients को the government in their thought process उन्होंने उनको basically transfer किया to quarantine facilities, और जिस तरह से किया तो लोग डर गए. And लोगों का बहुत ज़्यादा frustration और complaint ये भी थी कि where is my right to privacy? And that's a genuine question to ask. So it was an interesting and difficult time, because on one hand आप एक अपना career आपका एक उसका एक central principle है एक patient की right to privacy, but at the same time because ये एक contagious disease है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन होना ताकि उसकी कंटेनमेंट एफर्ट्स को डायरेक्ट किया जा सके, इसको कुछ हद तक किया गया था अराउंड डेंगू, बट नोवेयर नियर टू द लेवल जिस लेवल पे इस क्राइसिस के दौरान किया गया है. एंड इट वाज नेसेसरी as it's a bitter pill to take, लेकिन at the same time it was necessary. So that was almost a very difficult and heartbreaking thing. इसी तरह फिर और उसके बाद फिर जो चैलेंज आता है कि बहुत सारे लोग जिनको कि इनको probably जरूरत है टेस्ट करवाने की, but they are hesitating कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें फिर रिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उनको साथ साथ समझाना कि अगर आपको कोविड है तो बेहतर है कि आप एक मॉनिटर्ड फैसिलिटी में हो, बेहतर है. सो इसेंशियली उनका हाथ पकड़ के वॉकिंग थ्रू दिस जर्नी विद पेशेंट्स. एंड अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्ड देयर हैंड एंड वॉक देम थ्रू दिस प्रोसेस, और the large majority of them have recovered. So but it's हम बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो फिजिकल पीपीई की शॉर्टेज है या पीपीई का यूज वगैरह जो चैलेंजेस हैं वो हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड आई वरी अबाउट माय टीम, are under immense mental and psychological pressure because of this. Yeah. Thank you, Dr. Saab. Sanan wants to know, are our labs recognized and working with? Generally, हमारे labs की reports, are they internationally acceptable? Are we partners? And then he wants to know specifically against COVID-19. Okay, against COVID-19, so we are following the same standards that are being followed elsewhere. We're using the same kits, we're using the same reporting criteria. उसके अंदर तो कोई ऐसा issue नहीं है.
in a matter of routine also, we have the same ISO 15189 standards and the College of American Pathologists external quality assurance programs that are used elsewhere in the world. So yes, labs don't generally partner with each other than कि अगर हमने कोई टेस्ट करवाना हो तो हम आपको outsource कर देंगे. So such outsourcing agreements exist. जिस तरह हमारा exist करता है with a couple of labs in the UK and the US. But other than that, I mean, lab reports are lab reports, and they are accepted pretty much everywhere now. But lab reports are also snapshots. They're a photograph of a patient की एक वक्त में क्या condition थी. So just because a patient gets a lab test done in Pakistan और कहीं से भी, और फिर वो अगर अमेरिका में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन हम इसको रिपीट करना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि पिछली रिपोर्ट गलत थी. इसका मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आज क्या सिचुएशन है एज अपोज टू आज से महीना पहले, 3 महीने पहले क्या सिचुएशन थी. So trends are more important than individual lab reports. So that's why lab tests are repeated sometimes. Great. We'd like to know your wishes. आप healthcare में काम करते हैं, माशाल्लाह आपने बाहर दुनिया में भी healthcare देखा है, पाकिस्तान में भी देखा है. क्या 3 ख्वाहिशात हैं आपकी पाकिस्तान के healthcare के लिए? अब एक तो ये है कि हम अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें. हमारा ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत मैसिव है और उसके अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर मेरी आधी से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज क्लास बाहर रहती है. एंड दैट इज़ ट्रू विद नॉट जस्ट माई क्लास बट classes 5-10 classes before me and after me. And it's primarily because हम as a nation healthcare पे इतना invest नहीं करते. As a government overall हम healthcare पे उतना invest नहीं करते जितना हमें करना चाहिए. अगर हम NHS की levels पे नहीं भी जा सकते, UK की 20% of GDP levels पे नहीं भी जा सकते, तो we can definitely do better than the 2% that we do right now. तो I mean, हम invest करेंगे तो opportunities create होंगी हमारे सबसे talented doctors के लिए कि वो यहाँ पे काम कर सकें. I think that's the biggest thing. And again, private sector exists particularly in healthcare to supplement the public sector, and it cannot be the primary caregiver. It's simply not the case anywhere in the world. So इसलिए the public sector is extremely important, more important, and उसको तवज्जो की बहुत ज़रूरत है. Wonderful. 3 wishes को एक wish में convert कर दिया. तो पाकिस्तान का talent, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लोकल अपॉर्चुनिटीज बन सकें और बननी चाहिए क्योंकि लोकली इलाज चाहिए. लोकली हम पूरे मुल्क में हम हब्स के थ्रू सिटीज के थ्रू बहुत सारे काम हो जाते हैं. बट यू गो डाउन, इफ यू गो इनसाइड द कंट्री, अंदरून जिसे कहते हैं, अब नॉट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन. और ये सारा काम जो है ये सोशल काम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं. कुछ प्राइवेट करता है, कुछ पब्लिक करता है, कुछ दोनों मिलके करते हैं. So wonderful. So brain drain in this community needs. But on the other side, I'm also glad that we have a very good youth. The doctors that we have exported, our expat doctors, they've earned a great repute everywhere, wherever they have worked. Yes, but your again, 3 hours from. मैं उसी को flip around करता हूँ ना कि we have these amazing doctors that they're treating people in other countries, and that's fine. I'm as proud of their reputation as you are, but I would much rather have some of them serving patients in Pakistan और उनके लिए अगर opportunities create करेंगे. Yeah. Okay, some more of them wanted here. Are you listening, guys? Come back. I heard a very powerful story yesterday. I'm going to share it with you. This comes from the Indus Hospital. Yeah. Comes from the Indus Hospital, and this is one of the doctors who was on a 2 million salary in a private hospital, and he quit that and he came to Indus Hospital. Yeah. On a 200,000 salary. So 20 लाख से 2 लाख की सैलरी पर आ गए. तो उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि पैसे तो मैं अभी भी बना लेता हूँ, प्रैक्टिस थोड़ी यहाँ करता हूँ, थोड़ी प्राइवेटली कर लेता हूँ, सो मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम. लेकिन जब मैं पहले वाले इदारे में जब था तो वहाँ जो भी काम करना होता था, जो भी इलाज करना होता तो पहले आके पेशेंट को बताना, पेशेंट की फैमिली को बताना पड़ता था कि अगर आप इतने लाख दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो हम काम करेंगे. लेकिन इंडस हॉस्पिटल पे वी आर एबल टू, आई एम जस्ट एबल टू डू इट. Yes. And I'm just building this case that there are many other stories, many other reasons.
for us to be here on this planet, in this world. And perhaps the biggest one is to leave a legacy. And your own land is a wonderful place to leave your legacy. That's what you keep thinking about half the time anyway. So you might as well come back and serve here. Or I am not, there's some who have settled and don't think about it, perhaps. But 3 hours from the government, Dr. Saab, क्या चाहते हैं हुकूमत से? हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स? I think much of the asks are already in progress. One big ask that used to be that used to exist was to create some sort of a legal framework, because it is very common for patients to get misguided. Sometimes by doctors अच्छा मीन कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ओपिनियन फर्क होता है, या लैब रिपोर्ट्स के अंदर फर्क होता है, या तमाम तर अच्छे ट्रीटमेंट के बावजूद एक पेशेंट किसी हॉस्पिटल के अंदर passes away. Deaths happen in hospitals every day, unfortunately. That is the nature of the beast. तो एक ज़माना था आज 10-12 साल पहले जब कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था और डॉक्टर किया जाता था और डॉक्टर को सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था. लेकिन अब पिछले चंद सालों के अंदर हेल्थ केयर कमीशंस बने हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, टू रेगुलेट दिस प्रोसेस, टू इंश्योर क्वालिटी, और साथ ही साथ रेगुलेट किया जाए कि अगर कंप्लेंट्स आए तो उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, रादर दैन के पुलिस इन्वेस्टिगेट करे. और उसके बिकॉज पुलिस जो भी करेगी इज नॉट अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ जो हुआ. सो ये एक बहुत प्रोग्रेस है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है इसमें. साथ ही साथ मेरे ख्याल से जो एक और चीज जिसकी जरूरत है वो भी हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू हो सकता है. बहुत ज्यादा क्वैकरी एग्जिस्ट करती है हमारे मुल्क में. तो बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों से प्रॉफिटियरिंग करते हैं और लोगों की ना जानने पे, लोगों के इनोसेंट होने पे, लैक ऑफ अवेयरनेस. यस, बिल्कुल. तो उसको ये ऐसी चीज नहीं है जो 1-2 महीने की कैंपेन के साथ रूट आउट हो जाएगी. इट नीड्स सिस्टमिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म की रूट आउट किया जाए. बट ये किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ काम किया गया है, इसके ऊपर और मेहनत की जा सकती है. तो फॉर एग्जांपल आई टेल यू देयर आर अबाउट 4000 labs in Punjab and another couple of thousand in Sindh, but there are only 350 pathologists हैं पंजाब में. So एक बहुत disparity है in terms of के pathologists कितने हैं और labs कितनी हैं. So that's just reflection के बहुत सारी जगहों पे काम कैसे हो रहा है. Wonderful. So Dr. Saab is an ultra positive man, as you can hear it. He's converting all that is there into opportunities and opportunities to work. काम करने की जरूरत है और उस काम में एंटरप्राइज भी है, उस काम में जॉब जनरेशन भी है, उसी काम में हेल्थ केयर अपलिफ्टमेंट भी है. हमारे मसाइल सोशल कामों से सिर्फ हल नहीं हो सकते. हमारी एंटरप्राइजेस को और इंस्टीट्यूशंस को बेहतर होने की जरूरत है, और इस तरह की थिंकिंग की जरूरत है जो कि हम इस वक्त सुन रहे हैं. I'd like to know, Dr. Saab, from you, any advice you get to host so many of us, potentials and patients, I don't know what term you have, but they're your customers. Yes. And we use the lab. So 3 advices for us. And meanwhile, I'll also like to tell people, if you want to join us for question answers, it will last 5 minutes. Here is the link. यही link comment में भी है. सवाल पूछे. मुझे कुछ खास तरह के लोग आज शामिल लग रहे हैं गुफ्तगू में. दोस्त हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन ताल्लुक रखते हैं. Please join in. Ask your question. We have somebody. Dr. Saab is not just a medical practitioner, but a medical entrepreneur, and can really help you understand if you're thinking of. If you're an aspiring entrepreneur thinking of this, or you are a working professional in the sector and want to know more about the upcoming trends, so please join into the conversation. Here is the link, और आप comments में भी पूछ सकते हैं अपना सवाल. Thank you, Dr. Saab. Back to you. 3 advices for Pakistani customers. I think आजकल के लिए सबसे important advice यही है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसको कम्प्लीटली सेट असाइड कर दें और आप बैक टू नॉर्मल हो जाएं. अनफॉर्चुनेटली कोविड इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड आवर न्यू नॉर्मल फॉर सम टाइम. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें सिखाई गई हैं, उस दिन मैं टीवी पे एक ऐड भी देख रहा था
कमांडर सेफ गार्ड की, और मेरी बेटी बहुत उससे इंस्पायर हो रही थी हाथ धोने के लिए. सो यह हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक इनके ऊपर इसरार करना पड़ेगा. हम एक सेट असाइड नहीं कर सकते. इसी तरह ईद पे, ईद कुड बी अ ह्यूज कैटलिस्ट वायरस के स्प्रेड के लिए, अगर हम अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं करेंगे, लार्ज गैदरिंग्स और ये वो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. अभी कोई मुझसे बात कर रहे थे, मेरे दोस्त मुझसे बात कर रहे थे कि हम ईद के बाद कितनी छुट्टियां दें और कब दफ्तर खोलें, बिकॉज अब इजाज़त मिल गई है. तो मैंने उनसे कहा कि अगर एक्सपोजर होता है तो उसके बाद 4-5 दिन लगते हैं सिम्टम्स होने में, स्टार्ट होने में. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 1 हफ्ता वेट करें, बिकॉज किसी को अगर ईद के दिनों में अगर एक्सपोजर होगा तो 4-5 दिन तक, 6 दिन तक उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. तो लोगों को घर रहने दें कुछ दिनों के लिए. उसके बाद अगर इज अ प्राइवेट बिजनेसमैन, ही कैन डू दैट. तो वो कर सकते हैं, अपने दफ्तर में रूल बना सकते हैं कि यार आप 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी कर लें, कुछ नहीं हो जाता, वर्क फ्रॉम होम कर लें. तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है. दैट्स माय नंबर 1 पीस ऑफ एडवाइस. दूसरा जो मैं कहूँगा कि जस्ट एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इखलाक को बेहतर रखें. Everybody needs some kindness these days. Everybody needs, हर बंदा Wow. बहुत स्ट्रेस में है. So it's very important to just give everybody a little break. It's okay. I mean, हर बंदा एज पे है, हर बंदा प्रेशर में है. So it's understandable. So if you can be a little bit flexible. कुछ नहीं हो जाता. अगर जो चीज़ आपको चाहिए अभी नहीं मिल रही, बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी, it's okay. We can all manage. Uh, So that's really, just be kind. You touched a chord there. If God brings you to it, He brings you through it. Yeah. अगर खुदा आपको कहीं तक ले आया है तो वो आपको उसके थ्रू भी ले जाता है. Wonderful. Be kind. That's the second advice. Dr. Saab, go on. What's your third and the last advice? I And know you have a habit of cutting down on it. Okay, I ask you to do 3 things. You say no, one. One is enough. I will get the third one from you. Meanwhile, the I'd like to thank Qasim, Sardar, Sara, Shafat, Wasim, Sajida, Yasir, Ruxana, Noor, Torque. Thank you very much, my organization, for hosting this. Chughtai Lab team for hosting this. Sara, Sanan, Temina, all of you for being part of the conversation. Haris and Burhan. Ji, Dr. Saab, last advice from you. I think the make the best of it. I mean, just because हम ईद आखिरकार ईद है, तो ईद को एंजॉय करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. लेकिन वो जिस तरह आप और मैं इस वक्त, हमने शायद कोविड से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह एक ऑनलाइन सेशन के जरिए एक स्प्लिट स्क्रीन पे एक सेशन कर सकते हैं. कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब की बर्थडे थी. It was a 70th birthday. तो we had a Zoom meeting जिसमें मेरे ख्याल से 30-35 फैमिलीज और लोग सारी दुनिया से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे. और हमने सोचा कि दिस वाज सच अ फैंटास्टिक एंड अनप्रेसिडेंटेड थिंग. हमने सोचा ईद पे फिर से करेंगे, सारी फैमिली का वर्चुअल गेट टुगेदर करेंगे. तो जस्ट बिकॉज आप लोगों के साथ फिजिकली नहीं मिल सकते, इंटरेक्ट नहीं आप कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड अगेंस्ट इट के मिनिमम रखें. लेकिन साथ ही साथ लोगों को डोंट फॉरगेट पीपल. आप उनके साथ वर्चुअली भी मिल सकते हैं और मेक द बेस्ट ऑफ इट. Wonderful. Dr. Saab, stay positive. You're a positive family. Great to know you have contributed in your own work, business, enterprise, and practice in the healthcare. अल्लाह आपको और हिम्मत दे. और आप, मेरी दुआ है आप सब ऐसे healthcare, diagnostics, hospitals, जो भी privately health education में काम कर रहे हैं, may you guys scale up and may you scale become bigger. You are in no way in all the work that you do, you actually make work health accessible to many people across Pakistan. Dr. Saab, would you like to say anything at the end of it? Thank you very much once again for taking out the time. नहीं, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी का. इट्स प्लेजर. मैं आपको पहले बता रहा था, मैं बिग फैन, काफी देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ. तो it was very kind. Pleasure to have this chat and to be able to talk to your audience. Wonderful. I got a couple of WhatsApp messages from you that you wanted me to show, and I want to do that before we wrap up.
So just comment on that. This is your team. They're working in the field, and through your team, I also want to acknowledge the healthcare professionals who are doing it, making it happen every day. बिल्कुल बिल्कुल. I mean, no one man can do anything. और एक टीम जरूरी होती है. So ये हमने लाहौर में अभी से 2-3 हफ्ते पहले we started drive-through testing for COVID because it was something that was much needed. And we are actually in the process of starting a second one in Lahore and Johor town area in the next couple of days. The idea really is कि maximum लोगों को तेजी से टेस्टिंग करवा सकें सेफ्टी में भी. साथ ही साथ जब ये कोविड क्राइसिस शुरू हुआ था तो कराची में हमारी लैब तो है जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, पर हम पीसीआर टेस्टिंग नहीं कर रहे थे. तो बट वी डिसाइडेड ऑन वन संडे नाइट वी डिसाइडेड इन अ टीम मीटिंग के हमें कराची में पीसीआर करने की ज़रूरत है. एंड 8 days later we were doing PCR in Karachi, and that's incredible speed, incredible work, and that's only possible. जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टीम को मोल्ड करें तो आपको हीरे भी मिल जाते हैं. And none of this would be possible without this incredible team. Thank you. Congratulations, Dr. Saab, the Chughtai Lab team, for working day and night, for making a lot happen in quick time. And not just you, but all the people who dived in. When we were hit by the crisis, our collaboration came into action. सारे मिल गए, सबने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, कौन क्या कर सकता है, और यकीनन हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, अपनी रियलिटी में बहुत अच्छा हैंडल किया है. ये टाइम है, डॉक्टर साहब ने एम्फसाइज किया है कि ईद पे झपिया ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं. जूम जो है वो वैल्यूएशंस के मुताबिक 15 अमेरिकी एयरलाइंस की वैल्यूएशन के बराबर हो गया है. तो जूम जो है उसमें सिर्फ सालगिरह नहीं, उस पे फोरम सब कुछ मुमकिन हो गया है, और ये टूल्स बेहतर होंगे हमारे इस्तेमाल से. जब चेंज आए तो उससे लड़ाई ना करें, उसको समझें. हो सकता है हम बहुत ज्यादा निकल रहे हो सकता है हम बहुत ज्यादा मजमूए लगा रहे हो सकता है हम बहुत अनसस्टेनेबल तरीकों पे आगे हो, और ये वेकअप कॉल है नेचर की हम सबके लिए. अगर हुआ है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई भलाई जरूर है. आई ट्रूली बिलीव दैट. डॉक्टर साहब बिलीव्स दैट. डॉक्टर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि चैलेंज लफ्ज निकाल दें डिक्शनरी से और उस पर काम शुरू कर दें. रिप्लेस चैलेंज विद वर्क, चैलेंज योरसेल्फ विद इट. Thank you very much once again, Dr. Omar Chughtai. This was. Thank you, Dr. Saab. Take care. Stay safe. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Wonderful having Dr. Omar Chughtai. This was from the Chughtai Labs. Shafiq says health and education are most important topics and too much to work on. Please do that. Yes. में जितने दिमाग खुलते हैं उतने मौके नजर आते हैं. आई मस्ट टेल यू, जब मौके नजर नहीं आते तो शिकायतें होती हैं, विक्टिम मूड होता है, मैं क्या करूं, मैं टैलेंट लेके क्या करूं. फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज. क्वारंटीन सीरीज का मकसद इस कोरोना, इस लॉकडाउन, इस रमजान को आइडिया से भर देना है ताकि आपकी कॉन्वर्जेशन चेंज हो जाए. सारी गुफ्तगू सबके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए यकीनन कुछ ना कुछ जरूर है. All of these conversations are available on my YouTube. If you're not on my YouTube, may I please ask you to open YouTube right now, look up Umair Jaliawala. You're going to find my channel and do subscribe there. मैं एक पर्सनल टारगेट हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फाका होगा. वी पुटिंग अप सम ग्रेट कंटेंट देयर. आप सबका बहुत शुक्रिया. आज रात 11 बजे क्वारंटीन सीरीज एक और करेंगे, और आज हम रात में जानेंगे बैतुस्सलाम की स्टोरी. बैतुस्सलाम एक फेथ ड्रिवन ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट है, और जो काम वो करते हैं उसकी इस्लामिक इनसाइट भी जानेंगे. Join in tonight 11 o'clock, the Baitus Salam story, inshallah. Until next time. Thank